माननीय सांसद एवं अध्यक्ष महोदय, I request you all to take your seats, honorable members. I quickly welcome you all to the monsoon session of the Youth Parliament. I hope the session will go on peacefully, and now I request PM Sir to address the monsoon session. नमस्कार माननीय महोदय, मैं इस मॉनसून सत्र के लिए माननीय संसद सदस्यों का स्वागत करना चाहता हूं। माननीय महोदय, मैं वर्तमान सदस्यों को हमारी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में बताना चाहूंगा। ये प्रयास देश को एक नई दिशा देते हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कोविड-19 से शुरू करते हुए माननीय महोदय, मैं कोविड-19 टीकाकरण की रिपोर्ट साझा करना चाहूंगा। कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से शुरू और विस्तृत किया गया है। महोदय, हाल ही में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता टीकाकरण दिया गया है और भारत में अब तक कुल 200 करोड़ खुराक दिए जा चुके हैं और पूर्णतः टीकाकरण कराने वाले लोग 42.1 करोड़ हैं। महोदय, वर्ष 2022 से 23 में हम अपनी नई शिक्षा प्रणाली से पूरे देश में नई शिक्षा नीति ला रहे हैं। ये शिक्षा नीति विद्यार्थियों को कम उम्र में ही वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करेगा, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा। अध्यक्ष महोदय, हम दुनिया में वर्तमान स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की मांग मानव आवश्यकताएं हैं और इसके लिए हमें सीएनजी और आईएनजी का उपयोग करना होगा और यह हमारी जनता के लिए सबसे अच्छा कार्यनिवास है। धन्यवाद। Thank you, sir. Members to take oath or affirmation. Secretary General, please. Mr. Nidesh, who is elected from the Chitradurga constituency of Karnataka, will now take the oath or affirmation. Mr. Nidesh. Sir, would you like to take oath or affirmation? Oh, please. I, Nidesh, have been elected a member of the lower house of the Youth Parliament. Do swear in the name of God that I will bear truth, faith, and allegiance toward the Constitution of India, as by the law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am bound. Mr. Krishna, who is elected from the Parliament constituency of Uttarakhand, will now take the oath for affirmation. Mr. Krishna. Sir, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. And which language? In Hindi, please. मैं कृष्णा युवा संसद के निचले सदन का सदस्य चुने जाने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेता हूँ कि कानून द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची आस्था व निष्ठा रखूंगा, कि मैं सर्वप्रभुता को बनाए रखूंगा और जिस कर्तव्य के लिए चुना गया हूँ उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। Honorable members, I am to inform the House of the sad demise of our former colleague Shri Janga Reddy. Shri Janga Reddy was an active social worker who worked in rural areas, devoting his time and energy in helping poor students. He was the co-founder of Wagner Group of Institutions, an able parliamentarian and an effective orator. He took keen interest in the proceedings of the Parliament. He passed away at Hyderabad
मैं आपके द्वारा दी गई श्रद्धांजलि के साथ खुद को जोड़ता हूँ। मुझे जंगा रेड्डी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। वे हैदराबाद में भाजपा के पथ प्रदर्शक थे। हमने उनमें एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और सार्वजनिक व्यक्ति खो दिया है। मैं शोक संपन्न परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजने में खुद को और अपनी पार्टी को जोड़ता हूँ। Speaker Madam, I associate myself with the tributes paid by you and the leaders of the House. I would like to associate myself and my party in sending the condolences to the bereaved family. The House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved family. Prime Minister to introduce new ministers. Madam Speaker, I have pleasure in introducing you and through you, my house, the new minister, Mr. Ansh, Minister of Culture and Tourism. Mr. Lavish, Minister of Youth Affairs and Sports. Now the question hour starts. Question number 101, Miss Dini. Madam Speaker, question number 101. Will the Minister of Defence be pleased to state whether the Agnipat scheme will help to solve the problem of unemployment among youth? If so, what steps government propose to take in this regard? Honorable Minister of Defence. माननीय मैडम स्पीकर, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में देश के युवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसी दिशा में अग्निपथ योजना उन्हें एक कदम और आगे ले जाएगी। सशस्त्र बलों में शामिल होने और देश की सेवा करने के उनके सपने को पूरा करने का यह एक सुनहरा अवसर है। माननीय महोदय, इतनी सारी योजनाएं हैं, फिर भी रूलिंग पार्टी एक नई योजना और ले आई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। बता दें, इस योजना के तहत केवल 4 साल की नौकरी भी दी जाएगी, जो एक तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि भर्ती हुए कुल अग्निवीरों में से 75% अग्निवीरों को समाज में वापस भेज दिया जाएगा, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। माननीय महोदय, हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना देश से बेरोजगारी के डर को कम करने के लिए ही बनाई है। अग्निपथ योजना से हमारी सरकार का लक्ष्य यह है कि वह हर साल करीब 50,000 युवाओं को नौकरी दिलवा सके। इससे हमारी भारतीय सेना में सैनिकों की कमी तो होगी ही नहीं और साथ ही साथ नौसेना और वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। माननीय महोदय, लगता है रूलिंग पार्टी के नेता के पास कोई सख्त जवाब नहीं है। वह संसद को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय महोदय, भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए शुरू की गई इस नई स्कीम अग्निपथ योजना के अंतर्गत जिन युवाओं को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, उन्हें अग्निवीरों के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीरों को भारतीय सेना में 4 साल तक नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। माननीय महोदय, केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुआ। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के पाली रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने तोड़फोड़ की, वहीं बिहार के लाखीसराय स्टेशन पर विक्रमशाला एक्सप्रेस को रोक दिया, बक्सर में हंगामा किया, बिहार में 3 ट्रेनों में आग लगा दी। यही नहीं,
5% तक का आरक्षण। हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। बाकी बचे एलिमिनेटरों का क्या होगा? मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। बता दें, 4 साल बाद जब रिटायरमेंट का समय आएगा, तब भारतीय सैनिकों में से 25% सैनिकों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय सेना में अगले 10 और साल तक नौकरी करने का मौका दिया जाएगा और बचे हुए 75% सैनिकों को समाज में वापस भेज दिया जाएगा और उन्हें अन्य नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। Next question number 102, Miss Asia. Madam, will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state that exports and imports from Russia and Ukraine may be affected due to war? So what steps has the central government taken to ensure that the economy might not suffer? Minister of Commerce and Industry. The implications will be national, international, long-term and military. The issue will be political and economic with interlinkages between them. Since the war directly and indirectly involves many countries, the implications will emerge from international situations. But India has limited connects related to the banking and corporate sector with both the countries. So, the impact shall be negligible on such areas, as per the reports given by the SBI. But my dear Honorable Minister, we all know that the sanctions imposed on Russia lead to an increase in the crude oil prices, and it has already crossed the $100 per barrel mark, $108 as of 5th May 2022, which is the highest since past 14 years, and its price was already up by 45% in the first 6 months of 2021, and it was even rallying up to $80 per barrel. What do you want to say in this regard? To make you clear about this, I want to tell you that India will have a negligible impact due to all the sanctions told by you. As of now, India imports most of its oil needs, but majority of it comes from the Middle East. And logistics and transportation is way cheaper due to the geographical positions of the countries. माननीय महोदय, मुझे तो लग रहा है कि ओपोजिशन वालों को मिडिल ईस्ट के बारे में पता भी नहीं है। कृपया सदन की गरिमा को बनाए रखें। There is an adverse impact as India imports, as the figures clearly stated, that India imports $205 billion worth of oils and minerals, $609 million worth of fertilizers, and $832 million worth of precious stones from Russia. India imports around 80% of its oil needs from Russia. So increasing the prices of such commodities may lead to a considerable inflation in the country. What does the minister say about this? For the information of honorable members, Russia and Ukraine both are one of the leading grain producers and exporters around the globe. But due to the conflict, the production of such commodities are being halted. As of now, Russia imports the most grain production, but due to the war, there is a potential vacuum in the market. For instance, Russia and Ukraine both are the major grain producers, but due to the war, the production is being halted, and the potential vacuum is already being filled by India. So, I want to make this clear that our government is taking care of such things, and our government is trying to establish the balance between the exports and the imports. Question number 103, Miss Simon. Ma'am, will the Minister of Coal be pleased to state whether the demand of coal has increased to meet the enacted requirements of the country? If so, the reason for not increasing the domestic coal production? Minister of Coal. Mr. Speaker, yes, the demand for coal has increased to meet the energy requirement of the country. As per the latest data, the demand increased from 106.6 BU per month in 2019 to 124.2 BU per month in 2021. In 2022, the demand has
Miss Speaker, I do have data to show where our ruling government failed. In spite of the fact that India is the second largest coal producer with world's fourth largest reserve, but a steep surge in coal production. As per the latest data, coal stocks at the 100 thermal plants have fallen down below 25% of the required stock. Coal stocks at the 50 thermal plants have fallen down below 10%. How do you justify this shortfall?
being done with the burden of the right to fair compensation and transparency of land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2030 and relevant amendment and government resolution of the respective state government. Now, question hour is over. My fellow member, for God to No answer. more supplementaries, please, and please maintain the decorum in the house. Madam, a serious breach of privilege has been committed by the leading newspaper of Delhi. While commenting on the Public Account Committee, the paper has attributed dishonest conduct. So, I request you to allow me to raise a question on that matter now. Ms. Shikha, having given the notice of it earlier, you may give due notice of it with a copy of newspaper cuttings, and I shall consider it. You cannot string a surprise on me like this. I have already given the notice of it at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me, and I will let you know my decision. Now, papers to be laid. Honorable Minister of Steel and Mines. Madam, I like to lay on the table the following memorandum in English and version. The memorandum in between the Bengal Limited and Ministry of Steel in 2021 and 2022. Secretary to report message from our Chamber of Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the upper chamber of the Youth Parliament. In accordance with the provisions of the rules of procedure and conduct of business in the upper chamber of the Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of Right of Children to Free and Compulsory Education 2012, which was passed by the Rajya Sabha on 24th April 2012. Secretary to lay on the table a copy of bill as passed by the upper chamber. Madam, I lay on the table of the House the copy of Right of Children to Free and Compulsory Education 2012, which was passed by the Rajya Sabha on 24th April 2012. Now, let us take up the calling connection motion. Mr. Raju, please call the connection of the minister. माननीय मैडम स्पीकर, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती कीमत की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले एक वर्ष में रुपए की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है, पर सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और इसके परिणाम स्वरूप बढ़ती महंगाई के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं? Yes, Minister of Finance, please. Madam Speaker, no doubt the falling of rupee is a real concern for the economy, and the government is really very conscious about the situation. And the government is also taking the appropriate steps for it. Not only the members of opposition are worried, the members of ruling are too worried about the situations. The measures announced by the Reserve
जाओगे रिपब्लिक पार्टी वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तां। Minister of Finance, मैं उम्मीद करती हूँ कि सदन के सारे सदस्य इस गल नाल सहमत होंगे कि साडी नौजवान मेंबर्स दे साडे नाल शेयर होण ते मैं विरोधी पार्टी दे नेता नूं बेनती करती हूँ कि वो रिटेल विच FDI ਅਤੇ ਹੋਰ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दे बिलां दा समर्थन करन। विरोधी पार्टी दे किसी
महिला